बिल्कुल। सो इसको मैं कर देती हूँ रेलेवेंस इज की। एंड यस, कोई भी क्वेश्चन वो हम बचपन से क्लासेस में भी सुनते आए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में नो सच थिंग एज अ स्टूपिड क्वेश्चन। सो जो भी आपका सवाल होगा वो आपने करना है ड्यूरिंग द सेशन, नॉट ड्यूरिंग द सेशन मतलब आप हैंड रेस करेंगे, फिर आफ्टर द सेशन टी ब्रेक होती है, उसमें हमारे पास अगले कुछ दिनों के लिए काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, राइट। सो यू माइट बी फेसिंग सर्टन चैलेंजेस रिगार्डिंग सोशल प्रोटेक्शन इन योर वर्क। मेक श्योर कि हम लंच ब्रेक के लिए जाते हैं तो आप पूछ लें किसी से, ठीक है। अगर हम टी ब्रेक के लिए जाते हैं, मेक श्योर उसमें आप वो कॉन्वर्सेशंस को कंटिन्यू रखें एंड मेक श्योर कि वो रेलिवेंट हो, बट डोंट वरी कि अगर वो राइट नहीं है, वी आर नॉट हियर टू बी राइट। और मुझे पता है, मैंने खुद भी अभी जो आपका क्विज हो रहा था रिकैप वाला, मैंने मिस गाइड भी किया है आके कुछ ग्रुप्स को। सो अगेन, नो सच थिंग हैज अ रॉन्ग क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर। और कोई चीज? आई थिंक दिस इज गुड इनफ। एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। सो एनर्जी लेवल जब हमें लगेगा कि लो हो रहे हैं तो हम कुछ बीच में टी ब्रेक इंट्रोड्यूस करा देंगे या हम कुछ करेंगे कि एनर्जी लेवल्स लो नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे 9 to 5 ऑलमोस्ट चल रहे हैं पांचों दिन। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम उस लेवल की एनर्जी लेकर आ रहे हो। अदर देन दैट और कोई चीज अगर रह गई हो मेरी? यस yes. अब ये वो लाइन आ गई है जब मेरी राइटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं एट सम पॉइंट कहीं किसी पिलर पे लगा दूंगी, हम इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। नहीं, रिवाइज नहीं करवाऊंगी, आई थिंक यू आर ऑल अ वेरी गुड कोहोर्ट। ये तो एक फॉर्मेलिटी मुझे करनी ही थी, बट आई थिंक दिस इज गुड and we are all on track. So without any further ado, I will invite Dr. Sohail, who is with us for today. आज वो हमारा मॉड्यूल 4 को ऑफिशियली किक ऑफ करवाएंगे। He's going to start off by speaking a bit on coordination, और आगे throughout the day group activities वगैरह होती हैं, उसके बाद भी he'll be there to continue various discussions. इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई हेल्प करके मूव करा दे, दिस इज हेवियर। ये भी चल रहा है। कल हम इंशाल्लाह आज आफ्टर हम इसको Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Ms. Main, OPM, GIZ. It's a great pleasure to be here. Among many colleagues from my past, there are familiar faces in the room, people from whom I have learned greatly, people that I have worked with. Are there any native English speakers here? So इस कमरे में तो नहीं है, probably उधर हैं. So I'll communicate in a mix of Urdu and English. Wherever I feel easy in communicating in English, I'll do that. Wherever I need to lay more emphasis on something, I'll switch to Urdu also. I'll just try to make it as convenient and comfortable for your understanding as possible. Please feel free to answer questions in whatever manner and language you feel comfortable, once again. But that session of questions and answers is probably dedicated for the last 20 minutes or so. So I'll try to finish it in about half an hour, and then we can go to the Q&A session. Okay, so I hope you have learned the basic concepts of social protection by now. So we can probably then start from an advanced stage. We are going to talk about coordination today. Coordination, each of us would have a different understanding of coordination, right? And that is okay, because you have probably learned in the past that
we haven't yet agreed on a single definition of social protection either, right? So there are different international organizations with different definitions of social protection. All have almost the same essence though, right? But they can be different in their stresses, in the way they are communicated. And so if there is no common definition of, let's say, social protection, so it's very difficult to have a common understanding of a sub concept, which is coordination in social protection, right? तो अगर कोई ऐसी चीज है जो फर्ज करें आपको ये लगे कि कोऑर्डिनेशन में ये भी आता है जो आज मैं बताने जा रहा हूं, उसके अलावा देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर आपके ज़हन में ये होगा तो वो बिल्कुल ठीक होगा. There is hardly the breadth of any subject that can be covered in half an hour. So, but we can discuss a little bit more in the Q&A session. So I am Sohail Anwar. I am a civil servant by profession. By training, I have been a practitioner in poverty. My academic background is in poverty. Then I was the founding CEO of Punjab Social Protection Authority. That's an organization where I've worked for 5 years. And during that time, PSPA launched a number of initiatives, a number of new initiatives that were launched at the provincial level for the first time. Much of what I am going to say today is out of those experiences that I faced myself and my team, some of whom my esteemed colleagues are sitting here today. So these are those empirical reflections or own observations, which are also kind of grounded in the theory of coordination, but these are all relevant to the context of Pakistan. Whatever I am trying to say today, that is all relevant to the provincial context of Punjab and applicable to other provinces and the federal level also. My last appointment in the government until last month was Secretary of Planning and Development Department, Punjab. I was also the chairman for about 4 months. But now I am on leave from the government and I'm working with GIZ and FCDO's project, SNG, Subnational Governance Project, as the Senior Social Protection Advisor. Today we are going to discuss the concept of coordination by starting with the concept itself, the scope of coordination, and then different tiers where coordination is relevant. So the policy tier, policy of the international organizations, the federal government, the provincial, subnational level, the operational level coordination, that is interagency coordination between departments, several different departments, especially for multi-sectoral projects. And then the process level or the administration level, where within an organization, within one program and one aspect of program, there is the need for coordination. I'll give you examples of that, challenges and how to improve. So let's start with the concept and scope. I think I can probably better see from interrupting the view of any colleague. Right. So coordination की जैसे मैंने आपको कहा कि definition क्या है, तो मैं जो लिटरेचर रिव्यू कर रहा था तो मैं दो चीजें समझी के आपके सामने ले आता हूँ. द फर्स्ट वन इज ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप ने कोऑर्डिनेशन, सोशल प्रोटेक्शन की कोऑर्डिनेशन को डिफाइन किया है कि एज द अलाइनमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर एक्टिविटीज. सो अलाइनमेंट ऑफ stakeholders activities at the operational level in a coherent and holistic way to reach clarity, identified and shared objectives at the policy level. So basically ये definition ये कह रही है कि operational level पे अगर सारे stakeholders आपस में coordinate कर रहे हैं तो जो policy objectives हैं वो पूरा करने में मदद मिलती है. ठीक है.
सो जो स्ट्रेस है वो ऑपरेशनल लेवल की कोऑर्डिनेशन के इस डेफिनेशन में, और पॉलिसी लेवल में इस डेफिनेशन से ये लग रहा है कि जो at the policy level there are just objectives, whereas I mean from my own experience and from some of the literature we can see that there is a requirement for very active proactive coordination at the policy level also. अब ये दूसरा जो ट्रांसफॉर्म की एक डेफिनेशन है, ये अफ्रीका में प्लेटफॉर्म है जो इसी तरह से ट्रेनिंग्स करवाता है सोशल प्रोटेक्शन की. इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन पॉलिसी, प्रोग्रामिंग एंड डिलीवरी प्रोसेसेस. सो ये पॉलिसी में भी, प्रोग्रामिंग में भी और डिलीवरी में भी. सो कोऑर्डिनेशन तमाम जगहों पे इन्वॉल्व है और इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं. तो मैं बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूँ. मैं इसको समझता हूँ कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है कि आप अगर सोशल प्रोटेक्शन के प्रैक्टिशनर हैं तो आपने फ्रॉम द मोमेंट एन आइडिया इज कंसीव, आपके ज़हन में या आप किसी से सुने उसके ज़हन में, आपके मिनिस्टर के, सीएम के, किसी सेक्रेटरी के, किसी के ज़हन में जब एक नए वेलफेयर प्रोग्राम का आइडिया आता है तो कोऑर्डिनेशन उसी वक्त शुरू हो जाती है आइडिया को रिफाइन करने के लिए, प्रोग्राम डिजाइन के लिए. सो कोऑर्डिनेशन हैज ऑल दोज लेयर्स व्हिच नीड टू बी केप्ट इन व्यू. इसका स्कोप क्या है कोऑर्डिनेशन का? सो दिस इज काइंड ऑफ ए फ्रेमवर्क स्लाइड जिसमें मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें, उनकी जिस्ट, जो आज के लेक्चर की जिस्ट है, वो मैं इसमें रख दूं. सो एसेंशली अगर आप सोशल प्रोटेक्शन के किसी भी प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल देखें तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो आप उसमें करते हैं. आप उस प्रोग्राम का जब आइडिया या कॉन्सेप्ट फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसकी अप्रूवल कराते हैं. हमारे यहाँ आम तौर पे अप्रूवल्स जो हैं वो कैबिनेट लेवल पे होती हैं. सो अप्रूवल हो जाएगी और विद द अप्रूवल यहाँ पे जो फाइनेंसिंग की सोर्स से आनी है, द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज आल्सो अप्रूव्ड विद इन द अप्रूवल इटसेल्फ. वो करंट साइट से है, वो एडीपी से है, वो पीएचडीपी से है, वो कोई डोनर असिस्टेड प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट पार्टनर, लेंडर असिस्टेड है, व्हाटएवर इट इज. उसके बाद फिर आप उस प्रोग्राम को, उसका ये सारे डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, उसकी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन के मुतालिक एक कंपोनेंट है. इसमें आप सोच के देखें कि कितनी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती है. कम्युनिकेशन आउटरीच आपने करनी है बेनिफिशियरीज से, इसमें कितनी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है. Then Then registration process, registration, services and services and compliance, compliance, payment, payment, operations operations management, management, M&, and audit. So all of these processes, इनमें से कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ये लगे कि कोऑर्डिनेशन के बगैर आप कर सकते हैं? None of these, steps can be undertaken without very active coordination with, multiplicity of factors. तो coordination, जैसे मैंने पहले कहा, it could be at several levels: the policy tier or the policy level, operational tier, and then I call it process tier. You can name it differently also, but this is the very kind of that micro level जहाँ पे आप किसी एक प्रोसेस को, फर्ज करें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अब आप, there is an organization, let's say social welfare department है, वो एक प्रोग्राम चला रहा है. Let's say the program is assisting persons with disabilities with assistive devices, or let's say with unconditional cash transfers. अब अगर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स का प्रोग्राम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है, उसका आगे एक स्टेप है रजिस्ट्रेशन उनकी. अब उस एक स्टेप में कितनी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होगी उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और ये वो आगे एग्जांपल्स हैं जो मैं देने जा रहा हूँ पॉलिसी लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे और प्रोसेस लेवल पे. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं?
Okay. So you look at the policy level. So basically, this is a very simple framework where I have just tried to bring the objectives and the tiers, various tiers of the government with some examples on one slide, policy level की understanding देने के लिए. Let's say objective इन सारी organizations का, इंटरनेशनल लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे GIZ है जिसने आज ये इवेंट मुनक्कद की है. उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट है, आपके सब नेशनल टीयर्स हैं, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, वॉलंटरी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है. ये सारे इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से. ठीक है ना. So organizations have different mandates, but at times their objectives can be the same, but what the way they differ is their approach or their specific sub-objectives within the overall hierarchy of objectives. For instance, the purpose of this particular event is to develop understanding about social protection, right? This course, 6 weeks, 8, 10, 12 weeks. So this is to develop understanding on social protection. There could be another organization which is actually, approaching the same objectives with a different intervention. For instance, the running of a pilot. ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव भी, इसका भी ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इम्पैक्ट की स्टेज पे? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, राइट, थ्रू सोशल प्रोटेक्शन, थ्रू बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल. इसका भी जो आज की एक्सरसाइज है, इसका भी एंड ऑब्जेक्टिव ये है. ये एक मीन्स है कि आपको नॉलेज ट्रांसफर के जरिए उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए एम्पावर किया जा रहा है. इंटरनेशनल एजेंसीज का फॉर इंस्टेंस, अगर आपने SDGs को लेट्स से इम्प्लीमेंट करने, तो यू विल फाइंड सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग. या ये ऑब्जेक्टिव मेनली इट हैज कम फ्रॉम एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. UN ने ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली दिया है, वो इसे चैंपियन कर रहा है. नेशनल गवर्नमेंट्स हैव साइंड इन and they are trying to implement this objective that is given by an international organization, right? So there is this level of coordination that countries come together, they discuss at a supranational level about what they want to do in the next, let's say, 15 years. They come together, they come up with an agenda, then national governments start working on that. और उसके बाद सब नेशनल लेवल पे भी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश की जाती है. तो दिस इज हाउ कोऑर्डिनेशन हो रही है इंटरनेशनल लेवल से लेके लोकल लेवल तक एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. नेशनल एजेंसीज फॉर इंस्टेंस क्या कर रही हैं? अगर इस मुल्क की आप एग्जांपल लें, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन क्या कर रहा है, बिस्प क्या कर रहा है, ये सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं. ठीक है. फॉर सिस्टम की एक मिसाल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इफ इट हैज डेवलप्ड लेट्स से ए पेमेंट सिस्टम कॉल्ड रास, so what is this system aimed at? To provide easy and transparent transfers to a number of people, including the prospective beneficiaries of social protection program. ठीक है. सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है. नादरा फॉर इंस्टेंस क्या है? इट्स ए नेशनल लेवल डेटाबेस. इट्स ए सिस्टम where you can actually identify somebody, place them in a family or in a household. So Nadra has developed this system for us. NSCR, what is NSCR? National Socio-Economic Registry. So BISP has developed a system at the national level for the use of not only the national government but also the provincial governments and others. So national agencies अपने अंदाज में through development of systems, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स, राइट. पाकिस्तान में आपको पता है जो मेन कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है बिस्प का,
unconditional cash transfer program वो federal level पे instituted है. One can challenge why at the federal level, but maybe there is a wisdom in that. Maybe it ensures standardization across provinces, right? There are different capacities at the provincial level. So maybe if it was left to the provinces, तो हो सकता है पंजाब और स्पीड पे या और स्केल पे कवरेज कर रहा होता, सिंध और पे, बलूचिस्तान और पे, केपी और पे, राइट? सो कुछ बेसिक लेवल की प्रोटेक्शन ऐसी है, फ्लोर लेवल की सोशल प्रोटेक्शन, फ्लोर लेवल की, that needs to be ensured by the government, at the federal level. And then there could be supplementary programs, there could be complementary programs जो provinces में बन जाते हैं. आप अपनी अपनी needs के मुताबिक जो local या targeted programs हैं, हो सकता है कि पंजाब में, साउथ पंजाब में नीड्स डिफरेंट हों, सो प्रोग्राम की नेचर डिफरेंट होगी. साउथ पंजाब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हो सकता है डिफरेंट इंटरवेंशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करे कंपेयर टू केपी में लेट्स से जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की टेक्निक है, राइट? सो ये सारे मिल के बेसिकली, और इसके बाद फिर आप वॉलंटरी सेक्टर को लोकल एंड इंटरनेशनल, लोकल वॉलंटरी सेक्टर फॉर इंस्टेंस एक आप अखुवत के एग्जांपल ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे. इंटरनेशनल डोनर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स, लेंडर्स, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, ये काम कर रहे हो सकते हैं. डोनर्स लाइक जीआईजी, एफसीडीओ, ये काम कर रहे होते हैं. सो टुगेदर ऑल दीज एजेंसीज वर्क टू try to work towards the shared objective, shared goal and shared objective through their own resources, own means and own emphasis. Policy level पे जो दूसरी एक एग्जांपल है, sorry, I think I pressed the wrong button, but till the time it come back, okay. दूसरी जो है वो है कि पॉलिसी लेवल पे सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाने होते, बट आपने आपस की कोऑर्डिनेशन का, लेट्स से इन द सेंस ऑफ एमएनडी, आपने एक फ्रेमवर्क भी बनाना होता है. सो व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन डज एट द फेडरल लेवल इज नॉट ओनली टू लॉन्च न्यू प्रोग्राम्स, but also to give a common shared conceptual understanding of social protection in Pakistan, right? The strategic direction, they also try to set the tone and direction of social protection by giving a framework understanding for all provinces to follow. And within that framework, then provinces can develop their own policies and strategies, right? But at the federal level, there is a shared understanding. I give you an example from Punjab, for instance. Punjab mein, there are at least 26 departments and agencies जो सोशल प्रोटेक्शन के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, ठीक है? और अगर नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स पे जाएं, या आप इधर क्लिक कर सकते हैं, वापस जाइए, इसको क्लिक करना है लिंक को जी. अब आप अगर ये इनके नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स पे जाएं, तो ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. आगे जाते जाइएगा, बस ये सफ़े पलटाते जाएं. जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ से वापस जाइएगा. सो ये बेसिकली मोर और लेस 130 के करीब इनिशिएटिव्स हैं. ये मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन. यू कैन टेक अनदर लुक एट दीज प्रोग्राम्स. These are all those initiatives that the agencies running them claim to be social protection initiatives. And this is not an exhaustive list, by the way. There are new programs that can be included to this list, right? So if there are, let's say, 130 programs, projects, interventions, pilots going on in a province, so is there the need of,
taking a stock of all these programs, their activities, their beneficiaries, their services at the provincial level? Is somebody going to do that? That should be the mandate of some umbrella organization, some focal agency, to bring all these agencies together, again for a shared objective, right? Otherwise, the kind of disintegration this can bring to the system is huge. And the wastage of resources that this can cause would be huge once again. So it is essential to bring these agencies together to see whether some of the programs can be clubbed to save administrative costs, whether some programs can be complementing other programs, whether there are linkages that can be created within programs, whether there are possibilities of graduating households, people on social assistance to some labor market interventions. Till the time somebody is doing this analysis, somebody has the mandate to deep dive into all these programs. How is that going to happen, right? So ये policy level पे जो coordination का दूसरा important function है, ये बगैर coordination के नहीं हो सकेगा. So ये policy level पे, ठीक है? So policy level पे एक पहली slide थी objectives की हद तक, shared goals की हद तक. ये slide है operational level पे उनके काम, policy level पे किसी ने इन सारों की M&E करनी है. अब ऑपरेशनल लेवल पे देखिएगा, ये मैंने एक एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए. आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता है, बट कभी आप इकट्ठे मिलकर चीजें डिस्कस करें तो मजीद क्लैरिटी हो जाती है. लेट्स से ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस फ्लो है, ठीक है, जो मैंने इस आई जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टेड इट फॉर दिस कोर्स. आपने लेट्स से there is a need to reach out to informal workers and provide them temporary emergency assistance. I've taken this example because this is something that was actually required to be done during COVID. ठीक है ना, जब कोविड के लॉकडाउन हुए थे और वो बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स ले ऑफ हो गए थे, तो गवर्नमेंट को ये समझने लग रही थी कि उन तक कैसे पहुंचा जाए. इनफॉर्मल वर्कर तो छुपा हुआ होता है ना हमारी इकोनॉमी में, उस तक पहुंचना कैसे है. अगर आपने पहुंचना है तो लेट्स से मैं क्विकली इस पे जाऊंगा, अभी 5-6 स्लाइडें बाकी रहती हैं. आप 3-4 मैकेनिज्म्स एस्टेब्लिश करेंगे लेट्स से, जिस पे ये एक तरीके और भी हो सकते हैं, बट इस एक तरीके को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको डिमांड ड्रिवन बेसिस पे यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम. You will establish, let's say, a call center where people can call, right? And they can register themselves. There could be online registration activity. There could be desk registrations at various districts or tehsils. Okay. Once you have this data, let's say in Punjab, you can either house it at PITB, Punjab Information Technology Board, or PSPA, or maybe Labor Department, because it's for informal workers, right? ये step आ गया. अब आपके पास, now you have the data, but you do not know whether these people are actually informal workers or not, right? So you will run another verification. Let's say, so you don't know whether they are informal workers. Number 2, what is their economic status? इनफॉर्मल वर्कर है लेकिन लेट से आपके थ्रेश होल्ड से ऊपर है तो उसको तो आप नहीं देंगे. तो एक इनफॉर्मल वर्कर भी हो और वो जो पॉवर्टी का थ्रेश होल्ड है उससे नीचे भी हो, ठीक है. सो आप लेट स्टार्ट विद द पॉवर्टी थ्रेश होल्ड, पहली अप्रोच. उसमें आप 2-3 अप्रोचेस ले सकते हैं. लेट से मोबाइल बिल्स, किसी का कितना आ रहा है, सारों का अगर वो अवेलेबल नहीं होगा, लेट से NSCR डाटा,
बिस्प का पीएमटी स्कोर, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है, कोई भी मेथड आप यूज करेंगे, बालेक मेथड यूज करेंगे ऑब्वियसली, उससे आप ये सारे लोग, लेट्स से 10 million people registered in the province, through these checks you will come up with a short list of, let's say, 5 million people, right? उसके बाद अब आपने चेक करना है whether they are indeed informal workers or not, right? अच्छा, next level of verification, आप सोचते हैं कि हमने ये भी डुप्लीकेशंस भी देखनी है कि एक ही फैमिली से मल्टीपल लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया, हमने वन बेनिफिट पर फैमिली देना है, सो आप नादरा को भी यूज करेंगे, उनका जो फैमिली का के वन पर्सन वन फैमिली वन बेनिफिट, ले जी आपने वो भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उससे अब आपका कोहॉर्ट 5 मिलियन के बजाय 4 मिलियन पे रह गया, लेट से आगे आप चलेंगे, अब आपने फील्ड वेरिफिकेशंस करनी है, लोगों से पूछना है कि ये शख्स इनफॉर्मल वर्कर है या नहीं है। पंजाब में आप कैसे कर सकते हैं, लेट से एक तरीका है 24,000 ज़कात कमेटियां पंजाब में महल्ले की सतह पे, आप उनके जिम्मे लगा दें कि जी आप बताएं कि ये शख्स, इसकी एप्लीकेशन आई है, इज इट इंडीड ए डेली वेज वर्कर और नॉट, राइट? ज़कात डिपार्टमेंट या खुवत के फर्ज करें 600 ऑफिस हैं पंजाब में, आप उनके जो है ना वो केस वर्कर्स हैं उनको कहें, या आप डिप्टी कमिश्नर को कह दें कि वो अपने स्टाफ के जरिए, असिस्टेंट कमिश्नर्स के जरिए, या जिस तरह से भी अपने रेवेन्यू स्टाफ के जरिए चेक करके दे, ये लोग घरों का विजिट करेंगे, जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो लोग वेरीफाई होंगे उनका फिर डाटा आ जाएगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, लेट्स से पीएसपी है इन दिस केस, इन्होंने देने, या लेबर डिपार्टमेंट है, जो भी है, वो आगे किसी एजेंसी को हायर करेगा, लेट्स से बैंक ऑफ पंजाब को उन्होंने किया है, और वो एजेंसी खुद अपने ऑफिसेज में और किसी टेलको के जरिए उनको पेमेंट्स देगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस में कोई स्टेप आपको एक्स्ट्रा नहीं लग रहा होगा। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स कितने हैं इसमें, ये जो मैंने नंबर दिए हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हैं विद डिफरेंट एजेंसीज। कॉल सेंटर, उसके साथ आपने कोऑर्डिनेट करने, आपने किसी इदारे से, पब्लिक या प्राइवेट से, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम डेवलप करने और उनसे डाटा फ्लो किया करेगा आप तक। आप you will reach out to social welfare department to establish their offices, desks for registration. You will have an agency to receive all this data and process it. 4, you will reach out to LESCO and FESCO and MEPCO, ठीक है, मोबाइल बिलों के लिए। You will reach out to BISP, PMT डाटा लेने के लिए उनका। You will reach out to, ये मोबाइल बिल थे, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, सॉरी यहाँ पे मोबाइल बिल वाले मोबिलिंग की है, वो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक एजेंसी। यू विल रीच आउट टू नादरा, ठीक है, ज़कात डिपार्टमेंट, अखुवत, डिप्टी कमिश्नर्स, जो मेन सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक ऑफ पंजाब, अगेन ए टेलको। सो एक प्रोग्राम, जस्ट टू लॉन्च वन प्रोग्राम, यू हैव टू bring in the loop so many agencies if you want to run it successfully, and this is all coordination function. So you will agree on SOPs with all these agencies, you will implement those processes that have been mutually agreed, you will sign MOUs, who will do what, and then there will be an implementation mechanism. ये अगर इसमें से एक भी सिंगल जो चेन का लिंक है वो ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम डिलेस का शिकार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन, इतनी, ये इंटर एजेंसी है, दीज आर डिफरेंट 11 एजेंसीज व्हिच नीड टू कम टुगेदर। अब इनको इकट्ठा लाएगा कौन, ठीक है ना। There should be not only an organization that is championing this cause,
but also an organization that has the convening power to bring these together. ठीक है ना? Because these are parallel organizations. हो सकता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात करे तो they may or may not get the kind of response that is required for taking it forward, right? So there needs to be a forum which actually has some kind of convening power with accountability function जिसको सारे जवाब दे सकें. प्रोविंसेस में एट टाइम्स हम पीएनडी से ये काम लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में मोपास से काम कर सकते हैं. कई दफा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डेस्क बन जाता है इमरजेंसी में जब ऐसे काम किए जाते हैं. ठीक है, आगे चलिए. अब ये तो हो गया एक ऐसा प्रोग्राम जो नया शुरू करना है जिसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आपने रीच आउट करना है. अब आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस लेवल पे कैसे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है बिटवीन द वेरियस विंग्स एंड वेरियस डेस्क्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज द थर्ड एग्जांपल. लेट्स से अब वो प्रोग्राम शुरू हो गया है, अब उसमें रजिस्ट्रेशन करनी है. ठीक है, लेट्स से इसमें मैंने जस्ट फॉर द चेंज ऑफ फ्लेवर प्रोग्राम जरा डिफरेंट एक मिसाल के तौर पे यूज किया है. A program of giving assistance, again unconditional cash transfer to persons with disabilities. अब एक ऑफिस है जो शुरू हो गया हुआ है प्रोग्राम, अब उसमें डेस्क रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं. सो द फैमिली विल विजिट दैट ऑफिस. आप उसके लिए एक डेस्क बनाएंगे जो फ्रंट डेस्क होगा. ठीक है, then there would be a desk where their CNIC or their eligibility through basic data जो कुछ आपने acquire कर लिया हुआ है पहले, आप वो वेरीफाई करेंगे अपने दफ्तर के अंदर ही. उसके बाद फिर वहीं पे प्रॉबेबली अगर वो उनकी डिसेबिलिटी के मुतल्लिक कभी अगर आपको पक्का पता नहीं है तो वहाँ पे आप डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड कोई बनाएंगे. ठीक है, या अगर उनके पास नादरा का डिसेबिलिटी कार्ड है तो बाल डिसेबिलिटी का चेक होगा. ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी पीएमटी पे डिसेबिलिटी चेक होगा. उसके बाद लेट से किसी को यहाँ पे में कोई शिकायत पैदा हो गई है कि मेरी एलिजिबिलिटी तो गलत चेक हुई है या मेरी डिसेबिलिटी कोई सही चेक नहीं किया गया, आप वो ग्रीवेंस का एक डेस्क वहाँ पे देंगे या कोई मेथड देंगे उनको. उसी के अंदर जो यहाँ से क्वालिफाई कर गए हैं आप उनको उनकी बायोमेट्रिक करेंगे. उनको लेट से आपने एक सिम देनी है कि जिससे उनको मैसेजेस जाने, इंफॉर्मेशन जानी है या उस नंबर पे ट्रांसफर्स जानी है, आप वो देंगे. इसमें कोई टेलको इन्वॉल्व होगा. ठीक है, मुमकिन है आपको किसी बैंक के साथ बात करके उनका डेस्क अपने दफ्तर में बनवाना पड़े. ठीक है, उसके बाद कोई फर्ज करें किसी के बायोमेट्रिक्स नहीं उठ रहे, उसका डिसेबल्ड पर्सन है, वो एम्प्यूटेशन है, हाथ है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? पर्सनलाइज्ड वेरिफिकेशंस का किसी गैजेटेड ऑफिसर को कहेंगे देखो पर्सनल वेरीफाई करो कि ये डिसेबिलिटी मैंने देखी है और ये कार्ड इसी को मिल रहा है. कार्ड टैगिंग होगी, प्रोग्राम के मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा, उसको अगर एटीएम कार्ड देना है और एमएनडी वालों को उसका डाटा भेज दिया जाएगा. ये सारा दिस इज जस्ट वन स्टेप, द रजिस्ट्रेशन स्टेप. किसी को कार्ड देने के लिए, किसी को मोबाइल वॉलेट ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोग्राम के अंदर यू नीड टू कैरी आउट ऑल दी स्टेप्स. दे कैन नॉट बी डन विदाउट कोऑर्डिनेशन. आपकी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल मैंने पहले दी थी. ये इंट्रा एजेंसी, आपकी एजेंसी के अंदर ही विद इन द एजेंसी भी there is a huge level of coordination involved. ठीक है जी. Challenges, I'll not go into detail of challenges. 20 मिनट हो गए कि रहते हैं? हो गए हैं, अब उसमें खत्म कर. अच्छा, सो इस पे आप डिटेल से बात करेंगे अगले सेशंस में, लेकिन जरा आपका काम आसान करने के लिए मैं थोड़े से चैलेंजेस की नेचर बता देता हूँ
but you can improvise many more challenges in the process. एक तो हमारे यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन का ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क नहीं है. कभी आपने कोऑर्डिनेशन का कोई मेथड, कोई फ्रेमवर्क, कोई हायरार्किकल चार्ट कोई नहीं देखा होगा, ठीक है ना. कोई लॉ ऐसा नहीं है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल्स, रेगुलेशन, मैनुअल ऐसा नहीं है जो आपको कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिसेस के बारे में बता सके, एसओपीज दे सके कि सोशल प्रोटेक्शन के ये एसओपीज हैं कोऑर्डिनेशन के. हमारी जो जितनी कोऑर्डिनेशन हो रही है वो इवॉल्व करती है वक्त के साथ साथ. इट इज ग्राउंडेड इन प्रैक्टिस, ठीक है, बट नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड. अगर आप अभी लेट से पीएसपीए को कहें कि अच्छा आपने ये जो डिसेबिलिटीज की सारी की थी कोऑर्डिनेशन, इसकी कोई डॉक्यूमेंट हमें बना के दे दें, तो उनको आपको देने के लिए डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी. हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है कि हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते रहें, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते रहें ताकि वो पोस्टेरिटी के लिए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पड़े हुए हों एक जगह. हमारे यहाँ बहुत से सूबे ऐसे हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स ऐसे हैं. अनटिल रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट में भी ये इशू था कि कोई एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सोशल प्रोटेक्शन के सारे कामों को कर सके, ठीक है. पंजाब ने पीएसपीए बनाया, अब मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन फेडरल लेवल पे बनी है. अदर 3 provinces are still coming up with a central agency which will do all of this. मैंडेट्स डिफरेंट हैं डिपार्टमेंट्स के और एजेंसीज के, ठीक है ना. सो कोऑर्डिनेशन तब आसान होती है अगर एवरीबॉडी इज वर्किंग टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव. जो मैंने पीछे एग्जांपल दी, वो हो सकता है कि आप लेट से यू रीच आउट टू ज़कात डिपार्टमेंट और आप उनसे कहें कि हम इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए ये जो पर्सनल वेरिफिकेशन है आपकी 24,000 कमेटियों के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो आपको कहें कि हमारा मैंडेट रूल्स ऑफ बिजनेस में तो ज़कात का पैसा डिसबर्स करना है, ना कि इनफॉर्मल वर्कर्स की वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना. सो ये एक चैलेंज होता है कि डिफरेंट एजेंसीज ने अपने मैंडेट की तरफ काम करना होता है. सो जब मैंडेट डिफरेंट है तो उनका कल्चर, प्रैक्टिसेस, नोशंस ऑफ रिवॉर्ड, सैंक्शंस, एक चीज जिसके मुतालिक हमें पूछना ही नहीं किसी ने, हमारा हम उसमें क्यों सीरियसली लें. उसके बाद कंपेटिटिव एक्टर्स हैं. कई दफ़ा गवर्नमेंट के अंदर आपने देखा होगा कि 2 एजेंसीज हैं जो एक दूसरे को कोशिश करती हैं सबकत ले जाने की. ये काम लेट से पीएसपीए ने करना है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने करना है, ठीक है ना. सो ये इशू आप फेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन में. उसके बाद कोऑर्डिनेशन कई दफ़ा थोड़ी सी डिमांडिंग होती है, टाइम टेकिंग होती है इन इट्स एसेंस. जाहिर है आपने उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, फॉलो अप करना है. कई दफ़ा कोऑर्डिनेशन को अगर पहले से एसओपीज नहीं है बहुत स्ट्रांगली, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि किसने क्या करना है काम, ठीक है ना. उसके बाद कई दफ़ा कॉस्ट इसमें शुरू में आती हैं. there could be initial costs in coordination that could at the time जब आप when you are rolling out a program वो हो सकता है inhibiting लगे costs, although they will save costs at the end. Ultimately they will make program much more beneficial, cost effective, but to start with they need extra costs to be invested. If you want to bring a layer of coordination, it is going to require additional resources in the beginning. Or at times, measuring effectiveness uh, could be a little challenging because we have limited capacities of measuring success. We are going to discuss it in more detail. But whenever there is something that is well coordinated, then there needs to be a framework
to examine whether the intervention has worked well or not. And that is also something that one needs to come up with. We have capacity gaps. Social protection itself is a new area. हमारे यहाँ it's like about what 15 years or so that we started BISP, and there are systems that are still evolving, right? We have weak communication between agencies. I've discussed it before. Interoperability of data नहीं है. So अगर आप लेट से सोशल वेलफेयर से कहें कि अपना डाटा भिजवाओ यहाँ पे, या ज़कात डिपार्टमेंट से कहें, तो हो सकता है उनका डाटा एक डिफरेंट सिस्टम पे बना हो या डिफरेंट इंडिकेटर्स दे रहा हो और आप एक बिल्कुल डिफरेंट यूज कर रहे हैं. तो हमें बहुत सारी कैपेसिटीज जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी. देयर आर काइंड ऑफ वीक कैपेसिटीज. दिस इज द लास्ट स्लाइड. इसमें अगेन बहुत सारे और मेथड्स हो सकते हैं, बट दिस इज जस्ट लाइक some major examples how to improve. There could be much more than that, right? But that is what the afternoon session is for. You need to dwell deeply, go deeply into the challenges and how to improve those that are for the next sessions. But these are just some of the guiding issues. If we have a legal framework that is supporting the design, rollout, and implementation, that would be one step of improving coordination. There should be SOPs, mutually agreed SOPs among all agencies in a program that need to be agreed upon and notified. There needs to be careful mapping of stakeholders in the beginning. Till the time, मैंने आपको मैपिंग की एक एग्जांपल दी थी इनफॉर्मल वर्कर्स वाले में. अब आप जब तक मैपिंग नहीं करेंगे पूरे प्रोसेस को समझ के डिस्कस करके अपनी सारी टीम के साथ कि अच्छा इसमें फ्ला एजेंसियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब तक वो मैपिंग नहीं होगी, you cannot reach out to those organizations, you cannot agree SOPs, you cannot enter into MOUs. So mapping is essential. Appropriate forum with convening power शुरू में आप establish कर लेंगे. Proactive handling of HR, budget, MIS and procurement matters. ये वो इश्यूज हैं जो डिले करते हैं प्रोजेक्ट्स के रोल आउट को और इम्प्लीमेंटेशन को. प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, अब रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, फलां बैन लगा हुआ है रिक्रूटमेंट पे, लोग नहीं आ सकेंगे, रिक्रूटमेंट हुई है लेकिन आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, अब दोबारा अगला साइकिल री एडवर्टाइज कर रहे हैं. These things needed to be looked into carefully and proactively. बजट नहीं आ रहा, MIS की अभी डेटाबेस नहीं बनी. जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, आपका कोऑर्डिनेशन का स्टाफ ही नहीं होगा, तो आप कोऑर्डिनेशन करेंगे किस तरह से. कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस यू नीड टू एस्टैब्लिश. इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डाटा, इस पे काम शुरू से कर लें कि भाई ये डाटा आना है. लेट से ज़कात वाले जो हैं, वही मिसाल में दोबारा 24,000 कमेटीज हैं, वो कहते हैं कि हमने डाटा आपको देना किस तरह से है, किसी टैब पे इनपुट करना है, की इन करना है, कैसे करना है. वो डाटा आपके सिस्टम में पहुंच जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको प्रोसेस कर लेंगे. आपने शुरू में बनाना है सिस्टम. कैपेसिटीज, HR कैपेसिटीज, समथिंग जो आज जैसे हो रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, टेक्निकल स्किल डेवलप करना पड़ता है, और इसी तरह से आपने कई दफ़ा नए लोग लाने पड़ते हैं हर प्रोग्राम के लिए, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हों. कोई सिस्टम हो जो रिवॉर्ड्स और सैंक्शंस का हो. पीपल वर्क with incentives. There should be some disincentives not to work. वो in the first place लेके आए. उसके बगैर खुद ब खुद अगर आप समझें कि सारे के सारे सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो वो कई दफ़ा नहीं होते. And finally, there should be fair recognition of everybody working. क्रेडिट अकेले लेने की कोशिश ना करें. अगर आप एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और आप उसकी की एजेंसी हैं, आप 6 और एजेंसियों से काम ले रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम CM की मीटिंग में ना आ जाए,
या ACS की मीटिंग में उनको ना क्रेडिट मिल जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। उनको एक्नॉलेज करें, रिकग्नाइज करें, क्रेडिट दें, उन तक वो बात पहुंचनी है कि आपने फला मीटिंग में उनके मुतल्लिक ये कहा था। People feel motivated when their role is recognized and appreciated. Do give credit to others for their good work as well. Thank you very much. So, are you going to come in or I just continue with Q&A session? Okay, ji. Achha ji. So it's over to you for any observations, comments, your own experiences, Q&A. The floor is open. Ji. Since you come from a government sector with rich experience, clarity है कि किसी डोनर एजेंसी से नहीं आती। हम सबके अंदर सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम का एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी सब्सटेंशियल फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक से आ रही है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट एक अप्रेजल डॉक्यूमेंट जब हम देखते हैं उसके अंदर ये लेंस और ये क्लैरिटी इज लेकिंग। तो मेरा सवाल ये है कि सिंस यू कम विद रिच एक्सपीरियंस के ये डोनर को हम किस तरह कन्विंस करें कि वी हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, वी हैव अ क्लैरिटी ऑफ विजन, और हमारे लेंस को वो पिक कैसे करेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है हम सारों का शेयर्ड एक्सपीरियंस है। सो इसमें दो चीज़ें मेरा ख्याल है मैं कम से कम हमेशा मद्देनज़र रखता हूँ। पहली चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो भी कुछ है, जो इंटरवेंशन आप सोच रहे हैं, उसकी ओनरशिप आपकी गवर्नमेंट की है। और इन द एंड इफ यू आर somebody who is chosen by the government has invested its trust and confidence into you। ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। At the end of the day, we cannot blame any donor, any lender for anything that has not happened, any results that could not be achieved. So responsibility के एंगल से, और ये मैं responsibility accountability के एंगल से नहीं कह रहा। आप you know you just have one life, right? Every person has just one life, and in this one life you have one career, one main career। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से फर्ज करे नहीं किया, मैंने नहीं किया, 100% नहीं दिया, टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट बैक फॉर अनदर रन। ठीक है? तो मैं अकाउंटेबिलिटी ना भी हो तो मेरा दिल होगा कि मुझे एक चांस जो मिला है, आई शुड वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू मेक अ डिफरेंस। इस वजह से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। Donors or lenders, when they approach you, they generally come with a good intention। उनके पास कुछ रिसोर्स होता है जो वो आपको ऑफर करते हैं। अब आपने ये फैसला करना है कि हमने उस रिसोर्स को लेना है या नहीं लेना। नंबर वन, एक डिफरेंस हमेशा ज़हन में रखें, कोलेक्टिवली हम सारों को डेवलपमेंट पार्टनर्स कहते हैं। GIZ है, उसमें FCDO है, उसमें डैनिश या डच एजेंसीज हो सकती हैं, उसमें जाइका हो सकती है। ठीक है? लेकिन इन एजेंसियों के साथ साथ उसमें वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, उसमें ADB भी हो सकता है, उसमें और लोग भी हो सकते हैं जो डोनर्स नहीं है, जो लेंडर्स हैं। जो पहली कैटेगरी मैंने बताई वो डोनर्स की है। वो बेसिकली जब आपके पास फंडिंग लेके आते हैं, दे डू नॉट वांट गवर्नमेंट टू रीपे दैट अमाउंट। ये जो कोर्स है, ये अगर GIZ ने अरेंज की है तो ये कर्जे पे नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। दे आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प आउट, असिस्ट गवर्नमेंट, सपोर्ट गवर्नमेंट विद एक काइंड ऑफ ए शेयर ऑब्जेक्टिव जो उनका भी है। देयर आर अदर एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक
yeah, like ADB, who are essentially lenders, right? They come and provide you with the much needed fiscal space that is required. Washam will discuss more about it in the financing session. And at times you do not have the local resources. So you welcome their support, but you approach it more cautiously. आप ये देखते हैं एज सेक्रेटरी PND मेरा ये काम था कि पंजाब गवर्नमेंट में जितनी भी लैंडिंग आ रही थी वो एक कमेटी बनी हुई थी PND में जिसको मैं हेड करता था कि ये लैंडिंग किस तरह से आ रही है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ रही है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितनी देर में जो है हमने पे बैक करनी है. तो आप इन एजेंसीज को दोनों को कन्विंस करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें और मुमकिन है कि वो उस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें अगर आपको लगे कि वो सही कह रहे हैं. टेकिंग अ गुड एडवाइस फ्रॉम समवन that should always happen, but if they are kind of pushing their let's say own agenda और आपको है कि ये है भी लैंडर, दे भी कर्जा रहा है, टर्म्स भी अच्छी नहीं है और अपना कोई मतलब अपनी नौकरी पक्की कर रहा है, तो उसका हाथ रोकें और उससे कहें कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए, उसे चैलेंज करें और इन ड्यू टाइम आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं लैंडर्स में, डोनर्स में, और वो आपकी मर्जी से दाएं बाएं नहीं जा सकते बाय एंड लार्ज. बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है. टू स्टार्ट विद दे कम फ्रॉम देयर ऑफिसेज, उन्होंने कहीं और बैठ के सोचा होता है हम ये करेंगे, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट का उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता. जी, एनी अदर? सर कासिम जफर मेरा नाम है, पाकिस्तान बैतुल माल से. सर चैलेंजेस में अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डिफरेंट मैंडेट्स, उस वजह से वो चैलेंज आता है. सर प्रैक्टिकली जो मुझे प्रॉब्लम आई काम करते हुए कि हमारा सर जो एक्ट है ना वो इतना जनरलाइज्ड है कि उसमें पॉवर्टी रिडक्शन, उसमें अकोमोडेशन पुअर को प्रोवाइड करनी, ऑर्फन्स का जिक्र है. इन शॉर्ट सर ये कि डिफरेंट मैंडेट्स की बजाय उधर इतने ज्यादा मैंडेट्स डाल दिए गए हैं कि जो काम किसी से नहीं हो रहा होता ना वो हमें डाल दिया जाता है. अच्छा, अब इसको सर जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द सेम मैंडेट, तो ओवरलैपिंग ऑफ मैंडेट भी सर एक चैलेंज हो सकता है सर. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मैंडेट है, वो दोनों वो काम करने की कोशिश करेंगे तो वो कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी.